Hello and welcome back, friends, to our YouTube channel APARIGRAHA-LR Academy. Here we have started the Crack the Code CSAT series. Moving ahead in this series, in the last class I gave you this problem to solve, which was asked in the 2023 CSAT paper. Though prima facie this problem appears very vague because everywhere there are variables, but but if you know the simple compound interest formula and how it is applied, then this can be solved very easily. Fine, I am saying it very easily. In fact, it means very easily. So let's solve it. Do Applying simple compound interest formula, if p is the principal, fine, and r is the rate of interest. I'm not talking about this r. If small r is the rate of interest, fine, annual rate of interest, this is annual rate of interest r, this thing. And if it is says it is compounded annually, then n means, then n in that case will be 1. And and this is the c, that is the total value that will generate after n years. Let's say I say, if 8% is the annual rate of interest and say 10,000 is the principal. Let's say when 1000 is the principal, then 1 plus 8 by 100. And let's say if I wish to calculate the compound interest after 2 years, then n in that case will be 2. Fine, and we will be able to calculate what will be my sum after 2 years based on this simple formula. If in this case it says that, I'm just telling you what is how to apply the formula. Fine, now forget this thing for a while. It says a principal P, I'm talking about this P, becomes Q. Q means this Q in 1 year. In 1 year, let's say 1 year, when compounded half yearly. Fine, half yearly with R% annual rate of interest. So it says, for the first, I am talking about first statement till here. R% is the annual rate of interest. Annual rate of interest. Fine, R% the annual rate of interest. And then it says, mm, that it is compounded half yearly. Half yearly means for every 6, after every 6 months it is compounded. Then in that case n will be equal to 2. But this is what is this given, R% annual rate of interest. पर R% ये एनुअल है, तो 6 महीने के लिए कितना हो गया, R/2 हो गया. ठीक है, R/2 हो गया. तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर जैसे सी की जगह अब यहाँ क्यू बोल रहा है ना, सी, इन केस ऑफ सी इट इज क्यू. क्यू इज द वैल्यू जो 1 साल बाद हो गई है, और पी हमारा प्रिंसिपल है, पी इसको प्रिंसिपल ले लें. और यहाँ 1 + R/2 हो जाएगा. जो यहाँ पे आर है, R/2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि R इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी आर बॉदर्ड अबाउट कंपाउंडेड हाफ ईयरली विद R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि साल भर में 2 बार कंपाउंड किया जा रहा है, 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है इंटरेस्ट. और जो R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पर भाई हमें तो 6 महीने पे ही इंटरेस्ट निकालना है, इसका मतलब क्या, R/2 हो जाएगा. और ये 100 एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पे, इसके बीच मल्टीप्लाई है. और दूसरे वाला क्या है, इफ द सेम प्रिंसिपल P बिकम्स Q इन 1 year व्हेन कंपाउंडेड एनुअली विथ S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. फाइन, अब दूसरे वाले केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू P 1 + S/100 की पावर 1. क्यों? क्योंकि हमें 1 साल के लिए कैलकुलेट करना है. 1 year, फॉर 1 year वी आर सपोज टू कैलकुलेट. 8% इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. और एनुअली ही कैलकुलेट करना है 1 साल के लिए, एनुअली ही कैलकुलेट करना है. इसलिए यहाँ पे ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये सब नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि एनुअल दे रखा है, साफ साफ एनुअल दे रखा है. तो अब हमें ये बताना है कि आर बड़ा है कि एस बड़ा है, इस वाले फॉर्मूले से. ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आ चुका है. अब इसको हम लोग एक दूसरे को इक्वेट कर दें, क्योंकि क्यू दोनों साइड बराबर डिवाइड कर दें, तो ये फॉर्मूला ये ऐसा निकल के आ जाएगा. ये आ जाएगा 1 + R/200 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 + S/100. फाइन,
अब यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका अब इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस सिचुएशन से ये है, यू पुट आर इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू 3, एनी वैल्यू यू पुट, फाइन। इफ यू पुट आर इक्वल टू 2, देन दिस एल एच एस, पुट आर इक्वल टू 2, इन दैट केस एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा कितना, हम्म, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/200 का होल स्क्वायर। ये आप कटोगे 1/100 तो ये आ जाएगा 1.01 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरह 1.01 का होल स्क्वायर इसे करोगे तो आ जाएगा 1.0201। ठीक है, ये आ गया। और ये इज इक्वल टू 1 + s/100 लिखा हुआ है, जो जो हमारे एलएचएस में लिखा है। इसे आप सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 2.01। तो हमने क्या देखा, जब हमने r की वैल्यू यहाँ 2 ली तो s की वैल्यू 2.01 आ गई, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, दिस इज द easiest way to solve this problem, because once you arrive at this particular equation you are just required to put value here, so this can be easily solved. So this is one of those questions which you have to solve in the second round, fine. Those who are pro they can solve it even in first round, पर जिन्होंने अपना जिनको थोड़ा कमांड इंग्लिश पे थोड़ी है, थोड़ी सी मैथ पे कमांड है, तो सेकंड राउंड में इसको सॉल्व करें। पर आप ये देखिए कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, फाइन। मूविंग अहेड, दिस इज द basic number crunching question which yesterday I said that it can be solved using permutation combination, fine, it can be solved using permutation combination. However, this can easily be solved using simple method, very simple method. This I will cover in the next class. This is also one of the question which is regularly, this pattern of question regularly asked in UPSC. Last year I failed to solve this question in the CSAT paper. I could not solve this question, but when I came back, जब मैंने घर पे सॉल्व किया तो फिर मुझे लगा यार ये तो वाकई बहुत आसान सवाल है। सिंपल 1 + 2 + 3 + 4 ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस सवाल में करने का, और जैसे आपने ये किया, जैसे वो क्लिक किया तो खट से आंसर आ जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज रेगुलरली बीइंग आस्क्ड। इफ़ यू एनालाइज द PYQ, हर साल ऐसे दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो दिस बिकम्स एन इनएविटेबल, दिस कैन नॉट बी स्लेप्ट, बिकॉज 7.5 मार्क्स आपको तुरंत ग्रैब करने को मिल रहा है। वी शुड रिमेंबर दैट दिस ईयर इवन स्कोरिंग 66 मार्क्स had become a nightmare for people, fine. So my dear friend, today is World Thalassemia Day. You should donate blood today, because I have donated, and world donates blood. If you donate 1 unit of blood, then you save 3 lives, fine. 3 lives in which way? In your blood is differentiated into 3 parts. One is RBC, one is plasma, and I think third is blood corpuscles. So if you donate 1 unit of blood, then 3 unit can be utilized. Also, what is this thalassemia? Thalassemia is a genetic disorder when your body fails to create hemoglobin protein, and because of lack of hemoglobin protein, RBC is not there. Then RBC is not there, then इन दैट केस उस पर्सन के साथ क्या होता है, बहुत थका थका फील करता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी थक जाता है, ही बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो दीज आर द इश्यूज विद हिम। आई नो वन पर्सन, तो उसको क्या है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और हर हफ्ते वो ब्लड उसके में बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। वो ये लोग एक इस तरह के लोग हो जाते हैं जिनके अंदर जब तक पेट्रोल है तब तक ये चल रहे हैं। गाड़ी ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल तब तक चल रही है, और जैसे पेट्रोल ख़त्म हो तुरंत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी शुड कीप such things in our mind, and we should donate blood. We should donate blood. It is our duty to serve these people. Fine. Okay, thank you. Keep learning and keep working for your goal. I will come back with the next question. Thank you.